Okay, last class we studied about what was the need of classification and what 5 kingdom classifications are. Can you name them? All the 5 kingdoms? Sana, please name all the 5 kingdoms. 2 kingdom system of classification, 3 kingdom system classification. Classification into 5 kingdoms. 5 kingdoms के नाम बताओ. Monera, Protista, Plantae, Animalia, Fungi. Yes. So these at the end जितने भी क्लासिफिकेशन हुए, पहले 2 kingdom सिस्टम हुआ, फिर 3 kingdom सिस्टम हुआ, फिर 4 हुआ, एट द एंड 5 kingdom सिस्टम क्लासिफिकेशन इज डन, जो कि आज भी फॉलो हो रहा है. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम मोनेरा, दैट इज द फर्स्ट किंगडम, and we will study the basic characteristic of kingdom monera, and then we will study about bacteria, archaebacteria, eubacteria, mycoplasma, other most important organism of this bacteria kingdom or monera kingdom. Okay, so starting with the characteristics, mean general feature, what are the general features of kingdom monera? So first and most important feature of kingdom monera is what? They are the first member or sole member. Sole member include करता है that are unicellular. Sole member that kingdom ऐसा kingdom है जिसमें सिर्फ unicellular organisms ही पाए जाएंगे. Okay. Now second is what? They are the first inhabitants of the earth. First inhabitants of the earth. Life started with what? These kind of bacteria. So they are the first inhabitants of on the earth. And next important feature or general characteristic is what? They are most ancient, because as we know पहले start हुआ था life start to most ancient, we can say them. They are most primitive. और ये भी बोल सकते हैं हम कि they occur everywhere. They occur even now. They are present even in our hands, on the table, on water areas. Even if you take one full amount of soil, 1 fist of soil, that is एक मुट्ठी भर का अगर आप soil भी लेंगे तो भी उसमें लाखों millions of तुम्हें bacteria मिल जाएंगे. So they occur everywhere. Everywhere means they can be called as cosmopolitan. Okay. Now they are found in extreme habitats also. This one is important point. Okay, they are found in extreme habitats. Extreme habitat से इसका क्या मतलब है? Those places where humans or any other organism cannot exist. Extreme habitats like hot sulfur spring या hot springs. Okay, hot springs का temperature above 200 degree Celsius के above ही होता है. Okay, so इतने गर्म जगह में भी bacteria are found, and we can say they are found in desert. They are found in very cold areas like snow. They are also found in very deep ocean, जहाँ पे pressure बहुत ज़्यादा रहता है. Okay, deep oceans. Here pressure low है तब भी मिल रहे हैं bacteria. Here pressure is high, then also bacteria is found. Desert environment क्या बहुत गर्म है तब भी, and और गर्म means कि boiling temperature से भी ज़्यादा है तब भी क्या है? Bacteria are found. So they are found everywhere, every kind of habitat, even those kind of habitat where life is not possible, then also these kind of bacteria are found there. Okay. Next, they can live in and out of the living organisms. ठीक, ये living organisms के अंदर भी पाए जाते हैं ना सना. So in and out means what? In means indo parasitic form में मिलेंगे. अगर inside the body of any organism, indo parasitic form. ठीक, and out means what? They are found outside the body. Ectoparasitic. Outside the body means they will be found on upper layer of the skin. Or that's why they are called as ectoparasitic form. Okay. Next characteristic we can see is that their respiration. They can respire both, like in the presence of oxygen also, and in absence of oxygen also. And इसमें दो kinds भी आएंगे which we'll study further. And most of the bacteria, this one is important one, most of bacteria are heterotrophs. Are what? They are heterotrophs. Heterotrophs means what, Sana? And जो हम खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. No, some are autotrophs. Auto means खुद से prepare करने वाले, and yes, हम वो डिपेंडेंट रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पर. हाँ, ऑटोट्रॉप्स अपने से खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पे. ठीक है, तो most of the bacteria are what? They are heterotrophs mostly, and some of them are autotrophs. इससे बहुत एक अच्छा क्वेश्चन भी अराइज होता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. Let me give you a statement. Statement 1 says what? कि some of bacteria are heterotrophs. Next statement we can make is few of bacteria are heterotrophs. The third statement we can make that most of bacteria are heterotrophs. Which will be correct, Sana? Which statement is correct here?
Out of these three statements, which statement will be correct? Some of bacteria are heterotrophs, or few bacteria, or most of the bacteria? Most of the bacteria. Yes, because in NCERT it is clearly written most of the bacteria, not few, not some. ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ये क्या होगा? Most of the bacteria are heterotrophs. So you have to remember this topic or this point clearly. Next, we can say that bacteria simple in organization. They are what? Simple in organization, but they have complex behavior. यानी कि complex in behavior. So these are general features. इस पे भी क्या क्वेश्चन बन सकता है? Question can arise that like state true or false है, या statement होता है complex in organization and simple in behavior. ये statement true है? Most of the student क्या गलती करते हैं? See, they study that या complex भी दिया है, organization भी है, behavior भी है, simple भी है, तो ये true ही होगा. But statement, correct statement is what? Complex in their behavior and simple in their organization. So this statement is what? They have simple organization in their structure. Means their structure is simple, but their behavior is what? Very complex. In the sense what? कि वो लोग अपना shape change कर लेते हैं and they can survive any extreme environment and they are pathogenic also. Some are non-pathogenic also. So their behavior is what? Very complex. And simple is what? Their structural behavior is simple. The structure is simple. So this statement can also be asked in any question or exams. Now cell wall. Talking about the cell wall. Cell wall of bacteria. This one is most important point. Okay. Cell wall of bacteria, it is made up of what? First of all, it is non-cellulosic. Means cellulose नहीं present होता. Non-cellulosic. Okay. And non-cellulosic bacteria किससे बना है? Made of peptidoglycan. Made of peptidoglycan. Okay. अब peptidoglycan को हम लोग क्या बोल देते हैं? म्यूरिन भी बोल देते हैं. म्यूरिन भी कह सकते हैं और म्यूकोपेप्टाइड. Okay. So now peptidoglycan is what? It is formation of or combination of what? Peptide and glycan. So peptide is what? Peptide is protein itself. Protein ही है ना? Peptide is formed of what? Protein, and proteins are formed from what? Amino acids. So simple कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर एक तो अमीनो एसिड से बना है, दूसरा क्या है? ग्लाइकॉन. ग्लाइकॉन रिलेट किससे कर सकते हैं? शुगर से, क्योंकि शुगर से ही ग्लाइकोजन वगैरह बनता है. Sugar. And sugar is formed of what? Two components, NAG and NAM. NAG and NAM. And these two, NAG and NAM, what is their full form? N-acetyl glucosamine. Acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. So simply, इतना लंबा जो ये बढ़ा चढ़ा के पेप्टिडोग्लाइकन लाइक अ वर्ड है, सिंपली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड एंड नैग एंड नैम. टू कंपोनेंट से मिलके बना है. कौन कौन सा? एक तो अमीनो एसिड है एंड एक क्या है? नैग एंड नैम. नैग एंड नैम इज बेसिकली व्हाट? शुगर. सो वी कैन से कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड एंड शुगर. ओके, सिंपली. एंड इस दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या डिफाइनेशन, क्या नेम दिया गया है? पेप्टिडोग्लाइकन. अंडरस्टूड सना? Yes, sir. Okay. So one next character is what? Cell membrane bound organelles are absent. Cell membrane bound. These are just general features of kingdom Monera. Okay. Cell membrane bound organelles are absent. They are not present in bacteria. Cell membrane bound organelles like इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा. तो ये सारी चीजें क्या है? इसमें नहीं होंगी. What is found? Only ribosomal structure or ribosomes are found. Only what is found? Ribosomes are found. And that too, what kind of ribosome? 70S. That is primitive kind of ribosome. अब this 70S ribosome is what? It is combination of two smaller subunit and larger subunit. It is 50S and it is 30S. Now, math की addition मत लेना कि 50, 30 is 80. I should write it here. These ribosomal units are non-additive. इनको addition नहीं करना है. They S represent here what? Sedimentation coefficient. Okay? Or we can simply say Swedberg unit. Swedberg is he was the scientist who gave this S system. So Swedberg units. And what does this sedimentation coefficient do? This determines the partially measure the density. Okay? They measure what? Density. Measure density. Okay, density of what? Ribosomal structure की density होती है. So this one is what? Smaller subunit, and this one is what? Larger subunit. So bacterial cell में एक ही type
की सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो कि which is ribosome, and ribosome, that two ribosome is what 70S, and it is what 70S ribosomes are found, which is ribosomal unit which are non-additive, and these are also non-membranous. So non-membranous है. Ribosome जो पाए जाते हैं, तो ये 30 और 50 80 ना होना चाहिए था. that's what I have written ना. It is non-additive. Additive क्यों नहीं है? अभी let me just write this one, then I'll explain again. Non-membranous. See, non-additive इसलिए है क्योंकि 50 और 30 ये एडिशन नहीं हो रहा है. ये जो S देख रही हो, ये स्वेटबर्ग यूनिट, ये पूरी डेंसिटी एक स्ट्रक्चर राइबोसोम की स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन पार्शियली मेजर द डेंसिटी. इट इज मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ राइबोसोमल स्ट्रक्चर. डेंसिटी ऑफ राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स आर मेजर्ड, और इस डेंसिटी के बेसिस पे ये लिखा जाता है. ओके, नॉट दिस ऑन एडिशन बेसिस. पहले ही ये अपने माइंड में फिट कर लो कि जब भी किसी भी 70S और 80S राइबोसोम्स की बात होगी, दे आर नॉट एडिटिव, मींस कि उसमें एडिशन नहीं हो रहा है. 50-30 is not equals to 80, it will be 70 based on what sedimentation coefficient of this, what they have found. Scientists have calculated this sedimentation coefficient, and based on this calculation of S, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि ये 70S और 30S है. ठीक है, it is non-additive, that's why we should not use mathematics in bio. Okay, इसमें इस टाइम में तो मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई होगा. अंडरस्टूड नाउ? ये डेंसिटी मेजर करती है राइबोसोमल स्ट्रक्चर की, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट डेंसिटी ऑफ राइबोसोमल स्ट्रक्चर दीज नंबरिंग्स आर गिवन. नाउ अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so till now how many characteristics have been done, starting with sole membrane, member of the unicellular, then inhabitant है, first inhabitant है, most ancient है, most primitive है, सब जगह पाए जाते हैं, extreme habitats में भी पाए जाते हैं, they can live in and outside of a normal living organism. Respiration भी क्या है, both है, obligate और anaerobe means in the presence of oxygen भी है, in the absence of oxygen भी है. फिर क्या है, they are heterotrophs and some are autotrophs. Other characteristic of what, they are most of the organization क्या है, simple है, and complex behavior है. Next is cell wall. Cell wall क्या है इन लोगों का, made up of peptidoglycan, and peptidoglycan is what, it is combination of amino acid plus NAG and NAM. Okay, next characteristic is what, no cell membrane bound organelles are found. कोई भी cell membrane bound organelles नहीं पाया जाता. Next is ribosomal structure में only ribosomes are found. इसके अलावा एक और चीज पाया जाता है, that is genetic material. Okay, genetic material तो बैक्टीरिया में होता ही है. So genetic material बैक्टीरिया की genetic material को भी से न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं. एंड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियोइड इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, नेकेड डीएनए, बिकॉज इट हैज नो कवरिंग, coverings of what, membrane covering. Okay, that is why it is also called as naked DNA. Also, one of the reason is what, no coverings. Also naked DNA is called because it is without histones. Histones भी नहीं present होते हैं. Histones are what, the matter of DNA. Histone is a part of DNA. तो DNA में टाइप जो नॉर्मल लिविंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं. बट the bacterial DNA doesn't contain any histone protein in its DNA. तो इस वजह से भी क्या होता है, इसको naked DNA बोला जाता है. ठीक, now come to this slide. I've explained every point. Let us check. Cell wall is made of peptidoglycan. Peptidoglycan is what, polysaccharide and amino acid. Polysaccharide is what, basically glycogen and sugar only containing, which is a kind of mucopeptide. I've already told you peptidoglycan को म्यूरिक एसिड, म्यूरिन भी बोल सकते हैं, and mucopeptide भी बोल सकते हैं. Cell wall is what, their cell membrane, like you get a cell membrane of the prokaryotes and eukaryotes are almost like same, that is lipid plus protein. Their formation is same as of eukaryotic cell membrane. Okay, cytoplasm is lack cell membrane bound organelles. As I've told you earlier, they don't have any cell membrane bound organelles, like neither endoplasmic reticulum nor Golgi bodies nor vacuole nor any kind of things जिसमें कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है. Okay, nucleus is indistinct in prokaryotic cell. The nucleus is also known as incipient nucleus या genophore और nucleoid या fibrillar nucleus. So तुम्हें ये दोनों याद रखना है, genophore और nucleoid. These two terms are mainly used. Okay, genophore either we use or we use nucleoid. Incipient nucleus or fibrillar nucleus we doesn't use that much. The prokaryotes lack true chromosome instead of
they don't have true chromosome, they have false chromosome, which is made up of circular naked DNA plus non-histone proteins like polyamines. As I've told you कि histone protein नहीं होता, non-histone protein होता है, and histone protein ना होने की वजह से they are also called as naked DNA. False chromosome coils around the chromosomal region, which is also known as nucleoid. सही nucleoid, I will draw the structure, then I will make you understand. इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या है, 70S टाइप के होते हैं, जो क्या है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम का काम ही यही है कि उसको प्रोटीन को बनाना, इसलिए दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, लेट मी ड्रॉ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, simple bacterial structure. Okay, so we can take this is a bacterial structure. See, so this is the bacterial structure. Okay, now this one is what, cell wall of bacteria. This is what, cell membrane, ठीक है, और plasma membrane we can say. This is the space between the cell membrane or the plasma membrane. Okay, space between cell membrane and cell wall, and this inside is, this is what, nucleoid, and this is, they have plasmid. This is plasmid. This is the simplest structure of bacterial cell, and bacterial cell contains what, nucleoid structure is there only, and some ribosomes we can draw like this. Ribosomes are present, and they don't have any membrane, only some cytoplasm are coiled around each other, which is forming a nucleoid. And this one is structure is what, plasma membrane. This one is cell wall, and the space between them is this lining is the space between the cell wall and plasma membrane. And this inside this is what, cytoplasm, which does not contain any nuclear membrane bound organelle. तो साइटोप्लाज्म क्या है, खाली है, सिवाय राइबोसोम्स के साइटोप्लाज्म में कुछ भी नहीं है, एंड प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं इसमें, एंड न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं. सो दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोइड को मैं जीनोफोर भी यहाँ लिख देती हूँ मैं, जीनोफोर, सो दैट नो कंफ्यूजन कैन अकर. इट इज मेन जीनोमिक डीएनए, एंड यही है जिसमें मतलब जो बैक्टीरिया के सारे कामों को करने के लिए हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, एंड एनी अदर एक्शन जो आर डन बाय दीज न्यूक्लियोइड एंड जीनोफोर. Reproduction is also possible by the presence of this nucleoid or genophore. Okay, have you seen or understood this structure? Yes, sir. Okay, so now we will study bacteria, or we will study about bacteria, what are bacteria and what are their characteristics. Okay, the term bacteria was proposed by Aaron Berg. You don't have to remember the scientist's name, it is never asked till now. The bacteria has widespread distribution, be it in any environment like air, water and soil. So अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं भी जाओगी बैक्टीरिया तुम्हें मिलेगा ही. They have great capacity surviving. See, I have explained all of these characteristics in that general features only. All kind of habitats, prokaryotic microorganism है, peptidoglycan से बना है, extra DNA segments क्या होते हैं, plasmids. These extra DNA segments, these are what, extra DNA segments. In some this is found, in some bacteria this is not found. Extra DNA segment. Okay. In reproduction point, I'll explain those who have the plasmids, what are they called, and those who do not have plasmid, what are they called, we will study later. So cell organelles are what, they are absent. Cell organelles are absent in this. Size of bacteria ranges from what, 1 to 10 micrometer in length, and from 0.7 to 1.5 micrometer in width. This info is have been never asked, so it is just for your knowledge कि इतनी size से इतना range होता है when we see it in the microscope. Shape. On the basis of shape, 4 kind of bacteria are found. Which one is Coccus, Bacillus, Spirillum, Vibrio? Okay. Now shape को explain करते हैं. So this is one of the structure also. Figure है, flagellum पाया जाएगा, villi, cell wall, cell membrane, cytoplasm, nuclear material and capsule. See, nuclear material is what? It is just floating in the cytoplasm. It has no nuclear membrane, nothing, so it can float in the cytoplasm wherever it wants. Now I was going to explain. Yes. Shape के basis पे, on the basis of shape, 4 types of bacteria are present. 4 types. Those are what? First is bacillus. Bacillus kind of bacteria are what? Rod shape. They are what? Rod shape, like this. This kind of bacteria are what? They are called bacillus. The second one, coccus. They are what? Circular shape. Circular shape, and their structure will be somewhat like this. Next is Vibrio. Okay. Vibrio, their structure is like comma shape, like this. Okay, and fourth one is spirillum shape. Spirillum, they are spiral shape. Okay, like this, spiral shape. So these 4 different types of bacteria are found. The example, only 1 or 2 example you have to remember just for the school exams, and for NCERT this question only shape basis question पे आता है, not their examples are asked.
Okay, so you have to remember only one or two examples of each. Like coccus में streptococcus pneumoniae, which is a famous example, जो कि pneumonia cause करता है. Bacillus में lactobacillus bacilli. So only a few examples we have to learn which are famous. Okay, so see, spirillum is what? It is plural. That is what? Plural. When we use singular, we will say spirilla. Spirilla. Similarly, vibrio is what? It is plural. And singular is what? Vibrium. Coccus is what? It is singular. Plural we will use cocci. Here bacillus is singular. Plural we will use bacilli. Okay. So for naming means अगर some organisms are made based on spirillum only. Some are based on spirilla. So based on their singular and plural combination, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में स्पाइरला पाओगी, किसी किसी में स्पाइरलम रहेगा नेमिंग में. एंड एग्जांपल्स आर गिवन हियर. कोकस, दीज स्फेरिकल सेल्स होते हैं विदाउट फ्लैजिला. दे अकर सिंगल यानी कि मोनोकोकस भी हो सकते हैं, पेयर भी हो सकता है, टेट्रा मींस हियर इट विल बी डाई रहेगा, सॉरी डाइकोकस. डाइकोकस. 4 इज टेट्रा, चेन ऑफ सेल्स स्ट्रेप्टोकोकस एंड शीट्स में स्टेफाइलोकोकस. सो इसमें भी क्या है, कोकस में टाइप्स दिए गए हैं. कोकस में 1 रहेगा सिंगल मोनोकोकस, 2 रहेगा डाई, 4 रहेगा तो टेट्रा एंड चेन ऑफ सेल्स रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस एंड चेन के बजाय शीट में रहेगा स्टेफाइलोकोकस. नाउ बैसिलस इज व्हाट? दे आर रॉड शेप मोनोबैसिलस. सेम जैसे ऊपर पढ़ा है हमने वैसे इसमें भी है. पेयर्स में रहेगा डिप्लो, चेन्स में रहेगा स्ट्रेप्टो, फिर स्टैक्स में रहेगा पेरिसेम. स्पाइरलम में स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है एंड विब्रियो में सी शेप और कॉमा शेप है. विब्रियो कॉलराई, इसका एग्जांपल है स्पाइरलम और स्पाइरोकेट. ओके, सो एनी डाउट अबाउट दिस पेज? Structure I have already explained. So, any doubt till now? The general feature of kingdom Monera, and what about we have studied about bacteria. If you are having any doubt, you can ask Sana. Non-histone. Non-histone. Okay. Non-histone वैसे हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे. DNA ये है. So DNA के स्ट्रक्चर में प्रोटीन पाई जाती हैं. 2 काइंड ऑफ प्रोटीन मिलेंगी. प्रोटीन 2 काइंड ऑफ प्रोटीन रहते हैं, हिस्टोन्स, एक नॉन हिस्टोन्स. ठीक है, non-histones kind of protein. In detail we will study in 12th class के सिलेबस में है. इसमें 2 टाइप के और आ जाएंगे, सॉरी इसमें 2 टाइप आएगा, इसमें 3 टाइप आएगा. Further these 3 kind of proteins or histones, simply these are what? These are proteins only. Okay, so this protein जो कि mainly use होता है कहाँ पे? meiosis में और we can say crossing over में. So ये absent होता है बैक्टीरियल सेल में. एंड दिस काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि ओनली 2 टाइप का होता है, H2 और H3. आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, सो आई एम नॉट राइटिंग. सो 2 काइंड ऑफ प्रोटीन यहाँ पाया जाता है. वही प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में. दिस आई विल टीच इन एक्सप्लेनेशन और डिटेल इन फर्दर चैप्टर्स ऑल्सो. So you don't have to worry about that. I'm not able to learn what is non-histone and histone. Okay, you just have to remember कि बैक्टीरियल सेल में non-histone पाया जाता है. Okay. Yes, sir. Okay. So this page is clear. Now coming to this one. It is very simple one. Motility in bacteria. How bacteria moves or what are the movement. Atrichous, monotrichous, amphi, lopho, cephalo and peritrichous. This one you just have to remember the name and one example of each. Atrichous means flagella are absent. It is called atrichous form. Any bacteria, if it is simple, just this kind of bacteria is what? Atrichous. It is on the basis of what? On the basis of what? Flagella basis पे है. On the basis of flagella, flagella या flagella के basis पे bacterial को और divide किया. On the basis of shape we have studied. So on the basis of this flagella, what are their types? So atrichous जिसमें कोई भी flagella नहीं present है. Next क्या है? Monotrichous जिसमें सिर्फ एक bacteria present है. We can see in the diagram also. Atrichous is what? कोई भी flagella नहीं present है. Monotrichous is what? Only एक bacteria present है. Amphitrichous is what? एक bacteria, both the ends. See, one bacteria here. Sorry, one flagella here and one here. So one at the both end, one at both ends. एक ही flagella present है इसलिए इसको बोला जा रहा है amphitrichous. And cephalotrichous is what? Bunch of flagella at both ends. So एकदम minute सा difference है. Amphitrichous में एक flagella है, यहाँ पे क्या हो रहा है? cephalo में bunch of flagella present है. So peritrichous is what? Most of the bacteria like peritrichous. So peritrichous is what? Flagella are distributed. Flagella are distributed all over the body. Next is lophotrichous. Lophotrichous is what? Flagella is present only at the end and bunch of flagella is there. Bunch of flagella are present only at one end. Okay. So you just have to remember one example of each.
Cephalotrichus. Oh, peritrichus is not there, no? I've explained peritrichus, yes. So Lophotrichus is what? Flagellum is present on both the ends. Cephalotrichus, bunch of flagella is present at both the ends or one end, one end. Amphitrichus is what? One flagellum is present at both the ends. And peritrichus, flagella are found all over the body of bacterium. Okay? So this much is about the motility in bacteria, or on the basis of motility or on the basis of flagellar movement, 6 types of bacteria are found. Understood? Yes, ma'am. Okay, now this one, nutrition is bacteria. Mostly NCERT के questions जो भी आते हैं NEET में, NEET questions are mostly asked from this part. Okay? ये इस वजह से भी आ जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन दे प्ले रोल इन नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन इज अ चैप्टर ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन. सो घुमा फिरा के 12th और 11th के सिलेबस को मिला के ये न्यूट्रिशन से, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो मोस्टली क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हाउ दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन, हाउ दे आर फॉर्मिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी देम. Nutrition, it is of two kind basically in bacteria. One is what? In the characteristic I told you, na? One is what, Sana? Autotrophic and other is heterotrophic. Yes, autotrophic. Other is what? Heterotrophic. So autotrophic means they will always use inorganic compounds. Yeah, their source. Their source is what? Inorganic. Inorganic से ये तो बनाते हैं, like see, यूज करते हैं सन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं. तो these are what? These are source क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या H2S, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्सेज ही तो हैं. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सोर्स हमेशा क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक सोर्स. एंड हेटरोट्रॉफिक सोर्स, इसका सोर्स हमेशा क्या रहेगा? ऑर्गेनिक. ओके, नाउ ऑटोट्रॉफिक में भी क्या है? ये फोटो ऑटोट्रॉप्स में डिवाइडेड है एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स में डिवाइडेड है. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स. फोटो मींस व्हाट? Light. Yes, photo means light. Chemo means what? Chemo means by chemical synthesis. Okay, wherever you see these two kind of words, photo and chemo, always understand the photo means light required हो रहा है and chemo means chemical synthesis is going on. Okay, here is what? Light, and here is what? Chemical synthesis. Now photo autotrophs, ये हमेशा ही क्या होगा? इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? लाइट के प्रेजेंस में होगा. सेकेंड पॉइंट वी कैन से कि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब भी लाइट आएगा जरूर कोई ना कोई पिगमेंट इन्वॉल्व होगा, तभी हो रहा है. ओके, तो पिगमेंट प्रेजेंट है फोटो ऑटोट्रॉप्स में. ये ऑर्गेनिक फॉर्म रहते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक फॉर्म रहते हैं. ये क्या रहते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ऑर्गेनिक फॉर्म में. लाइक सी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म है. H2S क्या है? सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, इनऑर्गेनिक फॉर्म है. बट ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? C6H12O6. ये क्या है? ऑर्गेनिक फॉर्म है. एंड सल्फर बाय प्रोडक्ट. सी, बैक्टीरिया में क्या? दे डोंट यूज वाटर, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग H2S. बैक्टीरियल सेल, they don't make the use of water, instead they make use of H2S. So I'm going to write now also. See, ये हो गया. इसमें भी क्या है? They are using light and they are using pigment. And now ये H2S जो है ये क्या है? हाइड्रोजन डोनर है ना? बिना हाइड्रोजन के ये नहीं बन सकता. तो फॉर टेकिंग द हाइड्रोजन डोनर दे हैव यूज्ड H2S. तो H2O is not used in bacterial photosynthesis. This one is important statement. You have to remember that H2O, they don't use or they don't make use of H2O in their photosynthesis. Instead of what? H2S is used. Okay, and this is the main reason कि H2S use हो रहा है, H2O नहीं. Sulfur is byproduct and not oxygen. अगर वो लोग H2O use करते हैं तो oxygen would have been the byproduct, but instead of they using H2S, that is why their byproduct is what? Sulfur and not oxygen. So H donor और hydrogen donor you have to remember कहाँ से आ रहा है? H2S से आ रहा है. Okay, this much you have understood about phototrophs, bacterial phototrophs. One more thing, pigment. I have not told you about in their pigment. So they are using pigment. What kind of pigment is present? Two type of pigment is present for them to use. One is what? Bacteriopurpurin, and other is what? Bacterioviridin. So this bacterioperpurin is what? Purple color. नाम से ही परप्यूरिन है, पर्पल कलर. सो इसको परफॉर्म कौन करेगा?
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया परफॉर्म व्हाट, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन देम बैक्टीरियोपर्क्यूरिन एंड दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं ये बैक्टीरियल सेल में। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट बैक्टीरियोविरिडिन, दे आर ऑफ ग्रीन कलर, they are what, green color, and that is why they those organism green sulfur bacteria are there, green sulfur bacteria are there which have these pigment. So at the end we can say कि photo autotrophic bacteria जितने भी हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, और इनमें भी क्या है, बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म आएंगे, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, दैट इट इज purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria. These two kind of bacteria are involved in what, photoautotrophic nutrition of bacteria, okay, understood about this photoautotroph या photoautotrophic bacteria में क्या क्या हुआ है, पहले तो ये लाइट के प्रेजेंस में हुए हैं। ओके, यू कैन स्पीक सना इन दिस। दो ही काइंड होंगे ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यही दोनों काइंड मिलकर क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब कि फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, यही दोनों फोटो ऑटोट्रॉप्स है बैक्टीरिया में, बाकी और कोई फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं होगा। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ही फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, बाकी और कोई बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप्स नहीं है। अंडरस्टूड, इन्हीं के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी आएगा, इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, मैम नोट्स में एक और दिया था ना, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, लाइक वो इसमें आएगा, इसमें भी वही दोनों एग्जांपल है, बट डिफरेंस इज दैट नॉन लग गया है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। उसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो अलग ऑर्गेनिजम्स के हैं, मींस बैक्टीरिया के अलग स्ट्रेन्स के हैं, और इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएंगे ये अलग स्ट्रेन्स के आएंगे। सो यू हैव टू जस्ट मेंटेन और मेक श्योर इन योर माइंड कि पर्पल सल्फर कहाँ यूज हो रहा है एंड पर्पल नॉन सल्फर कहाँ यूज हो रहा है। नॉन सल्फर मींस केमिकल वाले एंड विद सल्फर वाले कहाँ जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स वाले में। ओके, so here I am going to explain this chemosynthetic. Understood about this photoautotrophic bacterial nutrition? Yes sir. Okay, so chemoautotrophs में क्या हो रहा है, केमिकल सिंथेसिस हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ये लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी रहेंगे उसको ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर उसी ऑक्सीडेशन से क्या लेते हैं, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज करके क्या मिलता है, एटीपी, एंड विद दिस एटीपी यूज फॉर व्हाट, फूड। यही एटीपी फूड के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी के लिए एटीपी तो चाहिए होता है। दैट एटीपी इज दे आर गेटिंग फ्रॉम व्हाट, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। सो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स लाइक व्हाट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, वी कैन से ionic compound of ammonia. So these are what, these are chemical compounds, and with their oxidation energy is released, and by releasing this energy they are getting their food or ATP which are used for food formation. Like see, we see from ammonia they are forming nitrite. Okay, nitrite. So in this one bacteria is used which is nitrosomonas. Then second we can say it is using nitrococcus. फिर अगर हमको ट्रांसफर करना हुआ, सी वी विल सी दिस इन डिटेल नाइट्रिफिकेशन चैप्टर में और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इज आल्सो दिस वन, इट इज व्हाट, नाइट्रेट। सो जितने भी बैक्टीरिया इसमें यूज हो रहे हैं कन्वर्जन के लिए, दैट ऑल बैक्टीरिया आर गेटिंग देयर एनर्जी और फूड फ्रॉम व्हाट, बाय दिस प्रोसेस ओनली, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, दीज आर नेम ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोसिस्टिस. So all these four, there are many kind of bacteria which are helpful in this process. So all these four bacteria are getting their nutrition from what? Getting their nutrition from oxidation. ये क्या कर रहे हैं, ये इन सब कंपाउंड्स यानी कि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन करने पे जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी के फॉर्म में, वो एनर्जी कौन यूज कर रहा है, दे आर यूजिंग दिस एनर्जी। ये चारों यूज कर रहे हैं उस एनर्जी को, तो इस वजह से क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग हेल्प और दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। ओके, सो ये चारों टाइप और भी बहुत सारे काइंड ऑफ बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे। सो ये क्या करते हैं, एक तो पहली बात, दे आर ऑल्सो यूजफुल, these are for nitrifying bacteria. Okay, these are what for nitrifying bacteria which are useful in helps in cycling of nutrients. See,
वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में रहते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट बनाना, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाना, फिर नाइट्राइट से फिर अमोनिया बनाना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस उन लोग का चलता रहता है। सो क्या है, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी उन लोग हेल्प करते हैं एंड इन दिस वे एंड गेट न्यूट्रिशन बाय डूइंग द सेम। सो ये लोग प्रोसेस भी कर रहे हैं एंड उनका न्यूट्रिशन भी हो रहा है। सो इट इज अ व्हाट, इट इज टू वे प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। और ये लोग क्या करते हैं, पिगमेंट इनके अंदर भी प्रेजेंट है, टॉकिंग अबाउट दैट पिगमेंट, पिगमेंट इनके अंदर भी प्रेजेंट है एंड जब पिगमेंट प्रेजेंट है तो इनके अंदर भी क्या है, दो काइंड है, वही सेम। कौन कौन से दो काइंड, बैक्टीरियो परफ्यूरिन एंड बैक्टीरियोविरिडिन। बट यहाँ पे क्या है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड नॉन, सॉरी पर्पल लिखना भूल गई, ओके, नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया and here non-green sulfur bacteria. Under this category only the examples will come. कौन सी, ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस एंड वी कैन से आल्सो राइजोबियम एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे हैं जिसको वी विल स्टडी अगेन, आई एम सेइंग वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। सो राइट नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि दो तरह की न्यूट्रिशन होती है बैक्टीरिया में, वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक, अनदर इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। And phototrophs use light energy and chemo one use chemical synthesis process. And light वाले में क्या है, फिर दो तरह के हैं and they use H2S instead of H2O and two kind of pigments are present, one is purple color, one is green color and their examples are purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria. सेम वे कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या हो रहा है, ये लोग केमिकल सिंथेसिस का यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, वो यूज करके वो लोग अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। इज देयर एनी डाउट इन दिस वन? लास्ट टॉपिक ओके, लास्ट इज पिगमेंट, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सबसे मेन पॉइंट, दे यूज inorganic chemical compounds. एक पॉइंट, inorganic chemical compounds like what, nitrate, nitrite, ammonia और ammonium ion etc. inorganic chemical compounds यही चारों में से किसी एक का रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जितने भी बैक्टीरिया हैं वही केमिकल सिंथेसिस करते हैं, मींस वही कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, मींस ऑल बैक्टीरिया व्हिच आर इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जब तुम इसको डिटेल में पढ़ोगी, उस प्रोसेस में जितने भी काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वही कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं और उनका काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, कि अपने एक ऑक्सीजन को ऐड करना एंड रिलीज करना एनर्जी। फिर एनर्जी को जब रिलीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एटीपी निकल रहा है और उस एटीपी को ये लोग यूज कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, मींस दे आर यूजिंग दैट एटीपी फॉर देयर ग्रोथ, देयर वर्क पर्पसेस। ओके, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनका जो खाना है वो डिपेंड कर रहा है किसी और पे। किसी और पे मींस व्हाट, कि दे आर वर्किंग बाय देमसेल्फ ओनली बट दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड्स को ही रिड्यूस कर सकते हैं, दे आर नॉट यूजिंग एनी अदर थिंग। जैसे कि इसमें क्या था कि फोटो और मतलब लाइट के प्रेजेंस में कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, केमिकल कंपाउंड के प्रेजेंस में करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में नहीं करेंगे। अगर ये केमिकल कंपाउंड्स नहीं होंगे तो वो फोटो अपना, सॉरी, वो अपना कीमो ऑटोट्रॉप्स की जितने बैक्टीरिया हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, वो लोग अपना न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। नाउ हैव यू अंडरस्टूड? जब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस पढ़ोगी ना तो उसमें और डिटेल में ये चीज आएगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कैसे केमिकल कंपाउंड्स को लोग रिड्यूस करते हैं। अभी के लिए बस तुम्हें इतना समझना है कि ये लोग अपना फूड यानी कि खाना कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं केमिकल कंपाउंड्स का, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपी, और वही एटीपी ये लोग यूज करते हैं अपने फीडिंग के लिए। ठीक, दिस मच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि तुम इतना याद रखो। नेक्स्ट चैप्टर और जो फर्दर चैप्टर्स आएंगे 11th एंड 12th में, उसमें इसमें डिटेल में दिया रहेगा नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, न्यूट्रिशन इज व्हाट, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। एंड ऑटोट्रॉपिक में क्या है, दो काइंड है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। एक्सप्लेन, फोटोसिंथेटिक इज व्हाट, जो कि ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर लाइक क्रोमेटियम एंड क्लोरोबियम। You don't have to remember the names. Again, I'm telling you, just have to remember purple sulfur and green sulfur. ये नाम अभी नहीं पूछेगा। Chemosynthetic bacteria में क्या है, they are able to synthesize organic food from raw materials and energy release कर रहे हैं। Again, nitrifying bacteria है, नाम बहुत कम याद करना है। Even if you are not remembering here, it is okay. क्योंकि further जब तुम 11th and 12th में आगे बिग चैप्टर्स में या बड़े चैप्टर्स में पढ़ोगे तो तुम्हें एक दो नाम खुद याद हो जाएगा। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज व्हाट, अभी इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे।
मोस्टली सी। अब आते हैं ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्टली जितने बैक्टीरिया हैं वो यही है हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर व्हाट हेटरोट्रॉफ्स। तो ये वाली मोस्टली क्या है हेटरोट्रॉफ्स हैं, एंड हेटरोट्रॉफ्स में भी क्या सम आर सैप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स, सम आर सिम्बायोट्स। यस then 7:30 से असाइनमेंट क्लास है ना? ओके, सो आई डिड नोटिस अबाउट द टाइमिंग। ये 3 खत्म करते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो सैप्रो